Congress workers protesting outside the AAP headquarters in Delhi, a day after the CBI raided the residence of Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia. The war of words among the Aam Aadmi Party, the BJP and the Congress continued on the second day. After the CBI carried out raids for 14 hours at 31 locations in 7 states, probing the alleged irregularities in the implementation of the liquor policy last year. Accused number 1, Delhi's Excise Minister Manish Sisodia denied of any wrongdoing. सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। Both Sisodia and Union Minister Anurag Thakur speculated about an arrest soon. इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जेल में है सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्ट हैंड, और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले में है। वो कहां होंगे, किस हालत में होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ये समय ही बताएगा। The BJP has alleged that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is the kingpin of corruption. The accused number 1 of the liquor corruption is Mr. Manish Sisodia, but the kingpin of corruption is Arvind Kejriwal. आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? Meanwhile, the Congress, which protested against the probe against its own leaders by the Enforcement Directorate in the National Herald case barely a month back, welcomed the probe by the CBI, saying the two cases are not the same. You became what I always knew he was, perhaps one of India's most dishonest persons, and perhaps one of the most dangerous to Indian politics. What is happening in the National Herald cases and what we are saying is that you already found out everything. So the raids are something that are not required. All data is available, all records have been available, all the evidence has been given, and we never protested against these people being called by ED. We only protested in the manner in which you are overdoing and you are making a display. You cannot complain when the agencies are doing their due diligence. And it is you who withdraw the niti. You took back this excise. Why did you take back the excise policy if it was so good? Amid the political turmoil in Delhi, AAP changed its election campaign strategy, with AAP chief Arvind Kejriwal including Mr. Sisodia in his upcoming election tour of Gujarat. The CBI, after completing searches at multiple locations on Friday, started investigation today in the Delhi excise policy case. According to sources, 5 accused were summoned and questioned in the Delhi excise policy case today, but not Mr. Sisodia. The offences listed by the Central Bureau of Investigation in its FIR are corruption, criminal conspiracy and falsification of the accounts. And while the agency has started with this investigation now, the political tussle between the Aam Aadmi Party and the BJP over the issue is all set to escalate ahead of the upcoming state assembly elections in Gujarat and Himachal Pradesh. With camera person Sanjay Kaushik and Mohammad Mursaleen, I'm Akshay Dongre for NDTV.